Hello everyone, welcoming you to the first class of the Basic Physics first year students. I will teach you from Unit 4. From today, we will continue to till your first semester, and I will teach you the topics, hidden topics of the mechanics, and your mathematical physics, and this will fail you as your offline classes and B. Okay, so we will start oscillation. After that we will go to any other topic. First हम मैकेनिक्स की ऑसिलेशन करें एंड मैथमेटिकल फिजिक्स भी करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेट में होगा. आफ्टर द ऑसिलेशन आई वुड स्टार्ट दैट टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. शुरू करते हैं हमारा सेशन. एंड अनदर थिंग, the guys who are preparing for any competitive exam in which physics and chemistry are required, I also teach them. If you are studying for NEET also, I will give my complete guidance to you in this YouTube channel. So please sincerely follow this YouTube channel by subscribing and hitting the bell icon. So let's start this with a warm welcome to all the first year students. To this chapter, oscillation. This is the chapter you have already studied in your class 11th. And another thing, guys, if you cannot understand my speaking level, so just try to hearing it daily by daily, and you're gonna be totally comfortable with this, because English is a very intimate part in our daily life. Going to be, I will also teach in Hindi and English by combining all that. So let's start. First of all, in this, guys, ऑसिलेशन में फर्स्ट टर्म जो आता है वो है पीरियोडिक मोशन का. पीरियोडिक मोशन is just gonna be say it and you will write it in your notes. It's not possible I will write all the things and teaching you. That's very complicated. So by help of my talking power, you can go into your open your notes, take up your pen and write. Okay, let's understand what is periodic motion. Let's understand first. If periodic motion is that kind of motion, that a motion which repeats. So its definition gonna be a motion which repeats itself in equal intervals is called periodic motion, and it should be in equal intervals. Have you seen the pendulum? In the string there is a pendulum that is going to be to and fro motion. Here doing to and fro motion in equal intervals, and it repeats its motion, so it is called as the periodic motion. If a body, okay, after this you would write, after the definition you would write, if a body in periodic motion moves back and forth over the same path, then the motion is called oscillation or vibration. Again I am saying, if a body in periodic motion moves back and forth over the same path, the motion is called
oscillation or vibration. If you are not available to write whenever I am teaching, so just by pausing. Now we are done with the periodic motion. Next we will go to simple harmonic motion, SHM. Simple harmonic motion. What is simple harmonic motion? Let's go into the definition. Before that, I want to understand you. A particle is said to be in SHM if the restoring force acting on the particle is directly proportional to the displacement and has direction opposite to the displacement. What I've said right here again, a particle is said to be in SHM. In SHM, if the restoring force, acting, if the restoring force is acting on the particle, is directly proportional to the displacement and has direction opposite to displacement. This is the definition, very much important definition. I would say that it's very much important. So I have written it. Now समझेंगे this through the differential equation of SHM. Next, our target or topic should be the differential equation of SHM. Okay, it's our next topic, differential equation of SHM. अब मैं now I am going to T. Right. अब लिखना शुरू कीजिए. If a particle goes SHM, a mean position or equilibrium position goes then if F is the restoring force and X is the displacement from mean position, then from the condition of SHM what we have, देखो, right, F is directly proportional to X. X is the displacement here. मैंने जो अभी बोला ये समझाया आपका, जो ये है आपका फोर्स है, दिस इज फोर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. हाँ, लिखना शुरू तभी से करो. मैं अगेन कह रही हूँ दैट आफ्टर दिस हेडिंग you would write what? If a particle goes SHM, a mean position or equilibrium position, then F is the restoring force and X is the displacement from mean position, then
from the condition of SHM we have this f is directly proportional to x. ठीक है, अब ये मैंने समझाने के लिए लिखा, अब नहीं लिखोगे. आफ्टर दिस यू वुड राइट f is equals to minus of kx. This is your formula. This is your formula. Sure. F is equals to minus of kx. Okay. Where k is the constant of proportionality. Proportionally called spring factor. Called spring factor or force constant or force constant. डन. तो आपको ये लिखना है द हाईलाइटेड पोर्शन. सॉरी. हाँ, k is the constant of proportional called spring factor और force constant. ठीक है, इसको आप लिखोगे. नेक्स्ट you would write here the negative sign appearing in equation 1. This would be equation number 1. Okay, this negative sign appearing in the equation number 1 shows that the restoring force is directed towards mean position. That is opposite to the direction of displacement. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट से हमारा फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखाया गया है. ओके, नाउ यू राइट बट फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन we know that न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या पता है? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता है कि F इज इक्वल्स टू m क्रॉस a. दिस वन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. ना वेलोसिटी को मैं इस तरह लिख सकती हूँ दैट दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ displacement. This is the derivative of displacement, and I can write m d square x upon dt square, double derivative of this displacement. Now from मैं इसको लिख देती हूँ from Newton's second law. ओके, तो इसको लिख लीजिए. शायद आप लिख ही चुके हो आफ्टर पॉजिंग द वीडियो. अब इसके बाद यू वुड राइट सो इक्वेशन 1 बिकम्स. इक्वेशन 1 हमारा क्या था? F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स. F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स. नाउ F की वैल्यू हमने क्या निकाला? m d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल्स टू 0. ओके, हो सकता है. अब
अब क्या करूँगा मैं, डिवाइडिंग m इन बोथ साइड में मैं m को डिवाइड करूँगा, m डिवाइड करूँगा तो ये क्या जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास d² x अपॉन dt² प्लस k/m x 0. This is equation number 2. Write equation number 2. I write here equation number okay. Okay. Sorry. Let us put, अब कुछ पुट पार्ट करनी है। इसके जगह में k/m के जगह I will put omega² and this is equation number 3. Okay. So the equation 2 becomes, here plus okay, for omega² x is equals to 0. This one is a 4. Equation number 4 हो जाएगा. Here equation number 2 and 4 known as, short form में known as differential equation of SHM की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं. ये हो गया. अब नेक्स्ट पेज पे चलो. शायद आपको समझ में आ गया होगा दिस वन पेज में क्या लिखा है. नाउ सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा. सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक है. लेट x इज इक्वल्स टू a e⁻t. इक्वेशन नंबर 5. dx इसको डेरिवेटिव करो. डेरिवेटिव करने से ये क्या जाएगा, अल्फा e⁻t. इक्वेशन नंबर 6. d²x अपॉन dt is equals to a α² e⁻t. Equation number 7. Using the values of equation 4. Now equation 4 से अगर मैं इस वैल्यूज़ को डालेंगे. इक्वेशन नंबर 4 क्या था, थोड़े देख लेते हैं हम. इक्वेशन नंबर 4 था ये. चलो ठीक है. इक्वेशन नंबर 4 में ये था. ठीक है, तो वही लिखेंगे ना. dx अपॉन dt देयर वाज d²x अपॉन dt². ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a α² e⁻t प्लस ओमेगा² इंटू x